नशे की खेप पकड़ी जाती है और वो यूटिलाइज हो रही है देश के अन्य भागों में। वो जो इतनी बड़े नशे का कारोबार जो लोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम क्या कर रहे हैं? और तीसरा, अगर पान मसाले पे सेस जो लगाएंगे, पंजाब का पाकिस्तान से 750 किलोमीटर का बॉर्डर है, हम बार बार मुख्यमंत्री भगवंत मान जी कहते रहे उसको मॉडर्नाइज करो, नशा बाहर से आ रहा है, उसको रोकने के लिए क्या इस सेस का यूटिलाइजेशन सरकार करेगी ऐसे इंटरनेशनल बॉर्डर पे? जो तमाम इशू है, मुझे लगता है कि इसको नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ना, और इवन इसमें तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इंपैक्ट ऑफ मेजर स्टेक होल्डर, इंपैक्ट ऑन कंज्यूमर। इसमें बड़ी अच्छी लाइन है कि नो मेजर चेंजेस एज प्राइसेस नॉट लाइकली टू गेट इंपैक्टेड। लेकिन आम कंज्यूमर को इसके प्राइस भी नहीं बढ़ेगा, उसका इंपैक्ट नहीं। क्या हम उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं? क्या पान मसाले को और लोग खाएं? क्या इस तरफ सरकार जा रही है? ज्यादा सेस बटोरेगी, उससे पान मसाले वाले जो कारोबारी हैं उनका कारोबार और बढ़ेगा। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं? ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। और लास्ट मैं कहना चाहता हूं, तमाम देश भर में टैक्स को सेंट्रलाइज किया जा रहा है जीएसटी के माध्यम से, अलग अलग तरीके से। जो पान मसाला तंबाकू से जो सेस इकट्ठा होगा, स्टेट्स, देश के स्टेट्स, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, तो स्टेट्स की भागीदारी, स्टेट्स का उसमें हिस्सा कितना रहेगा, क्या रहेगा, उसके लिए भी क्लैरिफाई करना चाहिए। अल्टीमेटली मुझे लगता है कि हेल्थ सिक्योरिटी अगर इस देश से, अगर देश की नेशनल सिक्योरिटी बेहतर होगी तो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए, लोगों के खान पीन बेहतर करना चाहिए, ना कि ऐसे चीजों को ग्लोरीफाई करके उस पर टैक्स लगा के उनको कारोबार करने वाले इससे तो उत्साहित होंगे और ये कहेंगे कि हम देश को सिक्योर कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करता है। तो मुझे लगता है इस पे सरकार को फिर से विचार करना चाहिए। आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Chairperson, for allowing me to speak on Health Security Say National Security Bill 2025, which proposes to levy a cess on machine installed and the processes to manufacture goods that fall under high health risk and high revenue category like pan masala and tobacco products. The main objective of the bill is to raise additional revenue in two categories: national security and public expenditure. But ma'am, from health security to national security, the purpose of collecting cess is to spend it for a specific purpose. But here, the spectrum is very broad, from health security to national security. Where will be the accountability? How the audit will take place is a serious concern that we have to focus. But anyway, this government brings a bill for consideration and passing. But till now, I have not seen any consideration, only passing. Whatever revenue that is generated from this cess is expended usually for a specific purpose. This allows the center to have more fiscal autonomy, but the point to be noted is it acts as new and big source of revenue to the union government. At the same time, the cess reduces the fiscal state and the financial autonomy of the states. Most importantly, the shift towards non-shareable taxes reduces transparency in fiscal management. Normally, in public spending, it is said that 1.1 to 1.5% GDP is spent by 2017 statistics. But as per the national health policy, it has to be minimum 2.5%, madam. This government will never believe in spending on healthcare, but it only poses as if it is having a serious concern on healthcare. Article 270 states that the states will not receive any share of cess, preceded a structural aspect that increasing strain the fiscal federalism. For example, although 15th Finance Commission recommended states should receive 41% of divisive pool, for 21-26, the actual share of the center gross tax revenue has declined significantly as the center now collects the largest proportion of taxes through non-divisible taxes and surcharges. As a result, the state have to encounter dual challenge that the share of the simple taxes diminishes while they continue to bear nearly 50% of public expenditure responsibility
particularly essential sectors like health, education, and infrastructure. In this context, introduction of additional sources from which space are excluded for restricted and undermine the cooperative federalism. Combining health and national security and merging the two, both unrelated objectives, under one cess is dilution of priorities. Funds meant for public health may be diverted to security purposes or vice versa. This reduces transparency. Madam Chairperson, I would like to bring to your kind attention that more than 1.5 lakh crores funds collected by the government through the varied scheme for the purpose of higher education, road development, welfare of construction workers are lying unutilized. I am not saying, Madam, CAG's report. There is a huge possibility of diversion of funds for the purposes mandated under the Finance Act cannot be ruled out at all. Cess do not form the part of the divisible pool to be shared with the states. The cess that are collected are to be deposited to designated reserve fund. There is a huge shortfall of 3.95 lakh crores. Cess, which was not transferred for specific purpose, especially in the field of oil industry, health and education. Madam, intended beneficiary funds are Parambik Siksha Kosh, that is called PSK in 2005, and Madhyamik Uchchata Siksha Kosh, MUSK 2017, and Pradhan Mantri Swastik Suraksha Nidhi in 2021. But CAC finding says in 2018 to 19 and 2023 to 24, around 37,000 crore is shortfall in transfer. But the Finance Ministry claims that it transferred 3.6 lakh crores, but still 1 lakh shortage is still there and it is not answered at all. The reasons are violation of fiscal transparency that is not transferring to the intended fund, violate Parliament authority and federal accountability and citizen trust. Madam Chairperson, another report, interesting report, which CAG says 2.75 lakh crore received from cess, 35 cess, different cesses, and levies in 2018-19. Only 1.65 lakh crore has been transferred to reserve fund, and rest was returned to CFI, that is Consolidated Fund of India. There is inflexible rule that we cannot park public funds outside government accounts. There are 3 funds in which government receipts are parked, and they are consolidated funds, contingency funds, and trusts. In 2021-22, government collected 52,000 crore, Madam, through health and education cess. Out of it, 60% of the fund, that is 32,000 crore, was transferred to Parambik Siksha Kosh. But till now, there is no fund transfer for MUSK and PMSSN, ma'am. Ma'am, last, ma'am, this government, interestingly, hiding themselves behind minor head 800. That is other receipts and other expenditures. In 2019-20, CAG report said, repeated uses of minor head 800 results in opaque of accounts and needs to be curtailed. In latest report, government auditor said 60% of the expenditure under 9 major heads like health, roadways, everything, ma'am. 1 minute, ma'am. Through land reforms was under minor head 800. The total expenditure under 9 major heads worked out 79,000 crore. Out of the 60%, 48,000 crore was treated as minor head 800. That is mere account adjustment, ma'am. So this is for the point of concern where the government keeps on imposing cess and being not utilized for the specific purpose. The transparency is lost, opaqueness is dominated, accountability is questionable. Hence, I strongly object. And last, ma'am, by adding one more cess, this government is making a big mess. Thank you, ma'am. Shri Manjunath ji. Honorable members will only be able to give 5 minutes each. Okay. Thank you, Madam, for this opportunity to debate on health and national security bill. Actually, when we are giving something to health, when we are giving something towards national security, in fact, it is not a stress. It should be a joy. That's what it is going to be, a minimal contribution, minimal responsible contribution for
nation's critical response. So certainly it is a sort of a privilege to speak on this occasion, because healthy nation is a strong nation, and today 60% of deaths in India is premature and is due to non-communicable diseases. Earlier, children used to bring parents for the treatment of all these diseases. Today, parents are bringing their children in the age group of 20 to 40 for the treatment of heart attack, brain stroke, high blood pressure, diabetes, and cancer. If you look at the GDP loss because of tobacco and related products, including pan masala, the revenue loss in terms of GDP is 1%, and nearly 5 to 8% of our health expenditure goes towards tobacco-related diseases, and at the same time, nearly 37,500 crores is spent towards these tobacco-related products, and including pan masala. So it's a matter of great concern. In fact, we have to congratulate our Honorable Prime Minister as well as our Finance Minister for bringing a lot of steps, because she has put a lot of money into the hands of the people, because up to 12 lakhs, it's an income tax exemption. And as a result, nearly 1 lakh crore is put into the hands of the people. And GST reduction, you take, it was the desire and dream of the people of this nation that life insurance should be exempted from GST, health insurance should be exempted from GST. Today, she has done that. 33 life-saving medicines are exempted from GST. So that means this shows how concerned is Government of India as far as health is concerned. And another important thing, today we have a national organ transplantation and tissue organization where organ transplantation has been included as a free procedure for the benefit of poor patients. So only my suggestion would be today heart, lung, kidney, liver are included under NOTO, what is called National Organ Tissue Transplantation Organization. But only my suggestion would be even the bone marrow transplantation need to be included, because bone marrow is also an organ, and because bone marrow transplantation in private sector is pretty expensive. It goes between 20 to 30 lakhs. So bone marrow, because in our state of Karnataka and some other states, is already included under Jeevana Sarthakate program. So I propose to include bone marrow transplantation under national program. And another important thing is Prime Minister National Dialysis Program. Today, people have accepted that dialysis is part of life. Earlier, there was hesitancy. And under this scheme, 28 lakhs chronic kidney patients are undergoing dialysis free of cost. Almost 3.5 crores cycles have been done. And there's a need to expand this national dialysis program because more and more people are coming. And with respect to, for example, you look at COVID and post-COVID, just I will take a couple of minutes. Just 1 minute. 1 minute, madam. See, yes, some of the chemotherapy drugs has been exempted from GST. And my appeal, because we are raising some cess, internal resource mobilization is going to happen because of health cess as well as security cess. And after chemotherapy, nowadays we give immunotherapy. So immunotherapy drugs are pretty expensive, and for each patient it costs somewhere around 30 to 60 lakhs. I draw the attention of our Honorable Finance Minister to exempt these immunotherapy drugs. There are nearly 40 immunotherapy drugs for cancer from the customs duty. As a result, the cancer care will be more affordable, more accessible, and this is one of the important things.
And just, in fact, we really congratulate the Ayushman Bharat program. We have a urban spoke model today for the treatment of heart attack. 3 million deaths are happening due to heart attack and brain stroke. Unfortunately, 30% of heart attack in India is below 40 years of age. Potential bridegrooms are suffering from heart attack, and this thing, under this urban spoke model, the Taluk hospital gave a thrombolytic therapy, which costs 15,000 rupees. It's under the scheme, NHM scheme. And then they go to the nearest city hospital for angioplasty and stent program, which is within the golden hour. The treatment has to be given within the golden hour for this thing. And after this program is introduced, the death rate in Tier 2 cities and Tier 3 cities has come down from 25% to 8%. So we are saving millions of lives. Another important suggestion, Madam, just see, we need to encourage some, because public-private partnership in Tier 3 cities. Because Tier 1 cities, yes, they have a fantastic both government hospitals as well as private hospital. We need to encourage these private hospitals to move into the Tier 3 cities. We have to consider some tax-free holiday for private hospitals who are going to set up in the Tier 3 cities. And defense expenditure, Government of India's defense expenditure is phenomenally high. Somewhere around 6.8 lakh crore is spent on defense expenditure, and modernization of armed forces is taking place. And India has demonstrated its might in the recent, Sindoor, Operation Sindoor. Just 1 minute, Madam, 1 minute. Operation Sindoor, and most of the weapons used were indigenous BrahMos missile. And recently, our defense expenditure has gone up. In fact, HAL in Bangalore has got orders for 92 the Tejas aircraft jets, fighter jets, at a cost of 62,000. So India is really growing strong. And at this point of time, our infant mortality and maternal mortality has come down significantly, thanks to ASHA workers as well as to Anganwadi workers. We need to support them by increasing their salary. And thank you very much. From defense to this to that. Shri Subarayan ji. வணக்கம். இந்திய அரசியலமைப்பு ஒரு ஜனநாயக அரசியலமைப்பு என்ற முறையில் இயற்றப்படுகிற மசோதாக்களை வெகு வேகமாக நிறைவேற்ற முயற்சிப்பது ஜனநாயக உள்ளடக்கத்திற்கு எதிரானதாகும். அதுவும் எதிர்க்கட்சிகளுக்கு அதிக நேரம் கொடுத்து இந்த பில் உரியதுதானா என்பதை ஆய்வு செய்வதற்குரிய நேரம் ஒதுக்காமல் இயந்திர கதியில் மிக வேகமாக கடந்து செல்வது, நிறைவேற்றுவது அரசியல் சாசனத்திற்கே எதிரானதாகும். நான் இங்கே ஒன்றை குறிப்பிட விரும்புவது, ஏன் எதிர்க்கட்சிகளின் நேரத்தை குறைக்க வேண்டும்? கூடுகிற நாட்களை அதிகரிக்க வேண்டியதுதானே. கூடுகிற நாட்களை அதிகரிக்காமல் ஜனநாயக அரசியல் அமைப்பில் எதிர்க்கட்சிகள் தங்களுக்கு உரிய எச்சரிக்கையோடு ஊடுருவி கண்டு குறைகளை காணுகிற வாய்ப்பை மறுக்கிறது இந்த ஆட்சி. எனவே இவர்கள் ஜனநாயக அரசியல் அமைப்பிற்கு பொருத்தமற்றவர்கள் என்பதைத்தான் நடைமுறை அனுபவம் உணர்த்துகிறது. நான் இந்த விஷயத்திற்குள்ளே வருகிறேன். ஹெல்த் செக்யூரிட்டி, நேஷனல் செக்யூரிட்டி இரண்டுமே முக்கியமானது தான். இந்த முக்கியமானதுக்கு இந்த செஸ் மட்டுமே உதவுமா? நிதியமைச்சர் அவர்கள் நிதி வளத்தை எங்கிருந்து பெறுவது என்று ஊடுருவி கண்டு உணர்ந்து அவற்றை நிறைவேற்ற முயற்சிப்பதில் நான் குறை சொல்லவில்லை. ஆனால் அவர்களின் கண்களுக்கு ஏன் கார்ப்பரேட் கம்பெனிகள் தெரிவதில்லை? ஏன் 16,60,000 பராக்கடன் என்று ரத்து செய்தீர்கள்? அதை கருவூலத்திற்கு கொண்டு போயிருக்க வேண்டாமா? அரசுக்கு வர வேண்டிய வருமானத்தை கார்ப்பரேட் கம்பெனிகளுக்கு மடைமாற்றி விடுகிற குற்றச் செயலை புரிந்துள்ள இந்த அரசாங்கம்
வெறும் சிறு குறு நடுத்தர தொழில்களின் மீது வரி போடுவதில் ஆர்வம் காட்டுவது குற்றச் செயல் என்று நான் குற்றம் சாட்டுகிறேன். அதேபோல் இப்பொழுது என்ன உதவி செய்யப்படுகிறது? 80 கோடி குடும்பங்கள் இலவச கோதுமையை நம்பி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் எப்படி தங்கள் மருத்துவ தேவையை நிறைவேற்றுவார்கள்? அவர்களுக்கு வெறும் PM ரிலீஃப் ஃபண்டில் இருந்து 3 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தால் செய்ய முடியுமா? அமைச்சரவையில் இருக்கிற அமைச்சர்கள் எல்லாம் 3 லட்சம் ரூபாயில் தான் சிகிச்சை பெறுகிறார்களா? ஏன் அவர்களுக்கு முழு செலவை கொடுக்கவில்லை? இந்த அரசு கொடுக்க வேண்டும். இந்த வருமானம் என்பது கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டிலும் சரி, கேன்சர், இதய நோய்கள், இன்னபிற நோய்கள், இவற்றின் முழு செலவையும் அரசாங்கமே ஏற்றுக்கொண்டால் தான் ஹெல்த் செக்யூரிட்டி என்பதற்கான பொருள் முழுமையடையும். அதை இந்த அரசு செய்ய வேண்டும். எனவே அதுதான் நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய ஒன்று. அடுத்து நான் குறிப்பிட வரும்போது, இங்கே செஸ் ஏன் போடுகிறீர்கள்? இரட்டை வரியா? ஏன் மாநில அரசுகளின் உரிமைகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிதைக்கிறீர்கள், பறிக்கிறார்கள், தொடர்ந்து பறிக்கிறார்கள் ஆட்சியாளர்கள். எனவே இதுவும் நல்லதல்ல. இந்த விஷயத்திலேயும் அதுதான் மிஞ்சி கிடக்கிறது. அதற்குரியதை செய்ய வேண்டும். ஆளும் தரப்பில் இருந்து கூட குறிப்பிட்டார்கள், ரஷ்யாவிலே இருந்து குறைந்த விலையில் எண்ணெய் வாங்கினார்களாம். அது ஒரு சாதனையாக சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள். அந்த எண்ணெயை விற்று கொள்ளையடித்தது யார்? அதானி, அம்பானி. நாட்டு மக்களுக்கு விலை குறைந்ததா? பெட்ரோல் விலை குறைந்ததா? டீசல் விலை குறைந்ததா? குறையவில்லை. எனவே இவர்கள் ஒரு வகையில் நல்ல பாஷையில் சொன்னால் திருட்டுத்தனம் அல்லவா? குறைந்த விலைக்கு வாங்கி அந்த குறைந்த விலையின் அனுகூலத்தை கார்ப்பரேட் கம்பெனிகள் அறுவடை செய்ய மடைமாற்றி விட்டீர்களே, இது ஒரு குற்றச் செயல் இல்லையா? எனவே இந்த அரசின் குற்றச் செயலை பட்டியல் போட்டால் நீண்டு கொண்டே இருக்கும். எனவே இங்கே முன்வைக்கப்பட்டுள்ள இந்த மசோதா என்பது அந்த 2 நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு அல்ல, இரண்டாவது முறையும் ஒரு வரியை போடுவதற்கான வாய்ப்பை தேடி இருக்கிறார்களே தவிர இது எந்த வகையிலும் நாட்டு மக்களுக்கு உதவுவதோ நாட்டின் பாதுகாப்புக்கு உதவுவதோ அல்ல. எனவே இந்த அரசின் இந்த நடவடிக்கைகள் முற்றிலும் எதிரானது. நான் இவற்றை எதிர்க்கிறேன். श्री राजकुमार सांगवान। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे आज स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पर बोलने का अवसर दिया है। सभापति महोदय, मैं स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 का पूर्ण समर्थन करता हूं, और मैं ही नहीं समर्थन करता हूं, जब से सदन में चर्चा हो रही है, जो हमारे सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथी हैं सभी ने इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। ये एक ऐसा विषय है जो मानव जीवन से जुड़ा है, जिनके सेवन से जो गंभीर रूप से बीमार होते हैं, कैंसर जैसी बीमारी होती है, उसके इलाज पर खर्च होने वाला पैसा, जिससे पूरा परिवार प्रभावित होता है। इसलिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारे विपक्ष के साथी हैं वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं। यह विधेयक देश के 2 सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जन स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक आवश्यक कदम है। इस विधेयक के लिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूँ। महोदय, पान मसाला और अन्य अधिसूचित वस्तुओं पर उपकर लगाकर सरकार जो अतिरिक्त संसाधन जुटाना चाहती है, वह सीधे स्वास्थ्य सेवा और सुरक्षा परियोजनाओं में खर्च होगा। यह व्यवस्था पारदर्शी है और समाज के हित में है। इस बिल के आने से अवैध उत्पादन, मशीनों की गलत घोषणा, टैक्स चोरी जैसी समस्या पर नियंत्रण होगा। सभापति महोदय, देश में तंबाकू कई यूनिटें बिना रजिस्ट्रेशन चल रही हैं। अक्सर पाउच गलत तरीके से घोषित की जाती है और बड़े पैमाने पर कर चोरी होती है। इसलिए इस बिल में निरीक्षण, तलाशी और जब्ती की कड़ी शक्तियां दी गई हैं, ताकि अवैध व्यापार को रोकने में प्रभावी कार्रवाई हो सके। उच्च उपकर और कड़े दंड से सरकार अनुशासन और पारदर्शिता लाना चाहती है। सभापति महोदय, राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं, इसलिए आधुनिक हथियार, तकनीकी निगरानी, सीमा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, इन सभी क्षेत्रों में
निरंतर निवेश की आवश्यकता है। सरकार एक निरंतर और सुनिश्चित राजस्व स्रोत बनाना चाहती है जो सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा पर खर्च हो सके। इस उपकर से मिलने वाली बड़ी राशि इन आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होगी। मैं सरकार के इस दूरदर्शी प्रयास की सराहना करता हूं और आशा करता हूं कि इस विधेयक से स्वास्थ्य ढांचा मजबूत होगा और अवैध उत्पादन पर रोक लगेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा को अस्थायी वित्तीय समर्थन मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस महत्वपूर्ण विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। श्री राजा राम सिंह। सभापति महोदया, हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल तक, तो पहला तो सवाल ये जो उठा है कि लैंग्वेज का हाइब्रिड बनाना बंद करिए, तो ये सही है, इसका मैं सपोर्ट करता हूँ। अलग अलग भाषाओं का अपना महत्व है, लेकिन हाइब्रिड मत बनाइए। और दूसरी बात कि नेशनल सिक्योरिटी शब्द अपने आप में अब क्या अपीलिंग नहीं रह गया है, या इस सरकार पर अब नेशनल सिक्योरिटी के लिए जनता इतना भरोसा नहीं कर रही है कि वो सेस लगा सके। इसके लिए हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस तक लाने की बात आई है। और वो सबसे जो नाजुक पहलू है, वो कहा गया है कि प्रथम सुख निरोग काया। तो उस निरोग काया के सवाल को छेड़ करके आम जनता से सेस लेने की इसमें कोशिश की गई। जहां तक नशा नियंत्रण की बात है, इस बिल के जरिए कि ज़्यादा सेस लगाएंगे, पैसा लगाएंगे तो नशाखोरी कम होगा, तंबाकू का सेवन कम होगा। तो ये बिल खुद कहता है इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर्स, no major change as prices not likely to get impacted। ये खुद ये बिल एडमिट करता है कि इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये उनको भी खुश रखना चाहता है जो इसके कंज्यूमर हैं। तो इसलिए यह जो मॉरल अथॉरिटी लेने की कोशिश की गई है इसके जरिए कि हम तो नशा विरोधी हैं, क्योंकि कई मामलों में इस सरकार ने मॉरल अथॉरिटी अपना कमज़ोर कर दिया है। संविधान की रक्षा के मामले में, लोकतंत्र की रक्षा के मामले में मॉरल अथॉरिटी कमज़ोर हुई है। तो कहीं न कहीं नशा के खिलाफ बोल करके, नेशनल सिक्योरिटी का सवाल उठा करके वो एक मॉरल अथॉरिटी गेन करना चाहती है, जो लगता है कि उसके मन में भी आशंका है। नेशनल सिक्योरिटी के सवाल पर उसने जो लापरवाही की है पहलगांव के मामले में, दिल्ली ब्लास्ट के मामले में, कश्मीर का आज तक इंटीग्रेशन नहीं हुआ, 3 यूनियन टेरिटरी बना दिए, बौद्ध का अलग, मुसलमान का अलग, लेकिन वो नहीं सॉल्व हो सका। लद्दाख भी फिर से सुलग गया। तो नेशनल सिक्योरिटी में सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा जो प्रादेशिक नागरिक हैं उनका सहयोग कैसे इकट्ठा किया जाए, इस मामले में यह सरकार फेल रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसकी जो भरपाई आप इस बिल से करना चाहते हैं। और अंतिम बात कहते हुए, चूंकि समय हमारा कम होता है, हम खत्म करेंगे कि आप टैक्स लगाने का बहाना नागरिक पर ढूंढते रहते हैं, इस बहाने उस बहाने। अगर अडानी के लिए 10 लाख पेड़ काट दिए गए बिहार के 1050 एकड़ जमीन पर, तो इससे जो हवा में ऑक्सीजन की कमी हुई, तो सेस उन लोगों पर लगाइए, टैक्स उन लोगों पर लगाइए, बड़े पूंजीपतियों पर लगाइए, कॉर्पोरेट घरानों पर लगाइए। ये नहीं कि दुनिया में अमेरिका। इस अवसर के लिए धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अर्थमंत्री जी का भाषण बहुत गौर से सुन रहा था, तो उन्हीं के 2-3 मुद्दों पर मैं थोड़ी बात करूंगा। तो इन्होंने कहा कि डीमेरिट गुड्स के लिए ये बिल लाया जा रहा है जो एक्ट बनेगा, लेकिन सर ये पूरे बिल में आप अगर देखेंगे तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहां लिखा है कि एनी अदर गुड्स विच में बी नोटिफाइड, यानी ये आज सदन से ये इजाजत ले रहे हैं कि इस एक्ट के तहत किसी पे भी ये सेस लगा सकते हैं। कल ये टेबल पे लगाए, मेज पे लगा दे, आपके कपड़े पे लगा दे, मेरे घर के गाड़ी पे लगा दे, किसी पे भी लगा दे। बात आज हो रही है पान मसाले की, लेकिन ये एक्ट पान मसाले का नहीं है, ये एनी अदर गुड्स उन्होंने बता दिए। फिर उन्होंने बताया कि हेल्थ
के लिए एक ला रहे डेटरेंट कि ज्यादा लोग ये तंबाकू वगैरह का इस्तेमाल पान मसाला ना करें, इसलिए किया है। अब इसके ऑब्जेक्ट्स में अगर जाते हैं सर, बिल्स के ऑब्जेक्ट में, इस बिल्स के ऑब्जेक्ट में कहीं भी नहीं लिखा कि ये डेटरेंट करके बिल ला रहे हैं। ये बता रहे हैं कि इनका टैक्स कलेक्शन के लिए बता रहे हैं। दिस अनप्रेसिडेंटेड दैट द गवर्नमेंट शुड इन द स्टेटमेंट से दैट इज अ डेटरेंट टैक्स, एंड येट इन द स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स नो मेंशन हैज बीन मेड। फिर ये सेस की बात करते हैं, ये सेस लाए और स्टेट से शेयर करेंगे। सर पूरे बिल में कहीं नहीं लिखा गया कि ये जो आमदनी आएगी इससे इसको स्टेट से शेयर करेंगे। सर स्टेट्स के कल भी उन्होंने बात की और सचिकांत शंतिल जी के विषय पे आज बबूले अर्थ मंत्री जी हो गए थे। टैक्स वसूल होगा तो कल्याण के लिए काम आएगा ना। नहीं मान सर, डेफिनेटली होगा। आप तो मेरे मुंह का मन का बोल दिए। तो ये कल उन्होंने बताया कि सेस हम स्टेट्स को दे रहे हैं, खाली पीली ये बोल रहे हैं। सर ये सीएजी का रिपोर्ट है और सीएजी ने कहा है 3,67,000 करोड़ रुपया सेस का जो स्टेट्स को देना था वो नहीं किया। हम कोई नहीं बोल रहा सर, सीएजी बोल रही है कि ये किया गया। फिर ये कैपेसिटी की बात करते हैं। वित्त मंत्री जी अच्छा जवाब देती है इस बात का। नो आई हैव गॉट द रिपोर्ट सर, मैं पेश करता हूं। दुबे जी मैं पेश करता हूं, आई हैव इट ऑन राइटिंग। सर क्या है, मैं पेश करता हूं। अगर सर मैं नहीं पेश कर पाया तो आप रिकॉर्ड से निकाल दीजिए। दुबे जी प्लीज थोड़ी सांस रुकाइए, दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है, थोड़ा संभाल के बोलिए। अब सर आगे उन्होंने कैपेसिटी की बात की कि कैपेसिटी पे टैक्स लगा रहे हैं। अब कैपेसिटी की बात यह है कि ये गवर्नमेंट हैज फेल्ड, ये अयशस्वी रहे हैं कोई भी कंट्रोल्स डालने के लिए इस टैक्स पे। ये जानते हैं कि ये टैक्स सब लोग डुबा रहे हैं और पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने कैपेसिटी पे लाया। फिर ये बात करते हैं सर, इन्होंने क्या लिया, इसको क्रिमिनल प्रोविजन लाए। पहली बार टैक्स ना भरने के लिए क्रिमिनल प्रोविजन लाया गया है। सर इट इज अनप्रेसिडेंटेड, कभी नहीं हुआ। ये क्यों लाया गया? अभी अगले हफ्ते ही हम बात करेंगे जन विश्वास पे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम क्रिमिनलाइजेशन कम कर रहे हैं। ये नया एक्ट ला रहे हैं जिसमें ये बोल रहे हैं कि अगर टैक्स देर से दे दिया, 30 दिन लेट दिया तो आपको जेल में डाल देंगे। ये क्यों ला रहे हैं? कोई नया बड़ा बिजनेसमैन इस पान मसाले की धंधे में आने वाला है, इसलिए क्रिमिनल इंटिमिडेशन करके छोटों को निकालने का प्लान है। मैं वो पूछता हूं। नहीं सर एक बात बताइए, तो छोटे पे लगेगा बड़े पे लगेगा, ये तर्क नहीं है तुम्हारा? नहीं छोटों पे ना क्रिमिनल लाएंगे, सबको डरा देंगे कि तुम निकलो। सर स्वीपिंग एनीवे सर जीएसटी 2 की बात करते हैं और कल भी इन्होंने बात की। एंड दे वर नहीं सर, 1 मिनट भी नहीं हुआ, ज्यादा देर नहीं लूंगा सर, इतना ही काफी है। श्री टी उदय श्रीनिवास। Conclude. I want to say, health is not a revenue model, sir. Addiction ये कोई टैक्स बेस हो नहीं सकता, और नेशनल सिक्योरिटी ये पान मसाला पे आप लोग नहीं बना सकते। थैंक यू सर। श्री टी उदय श्रीनिवासन। Honorable Speaker, sir, I rise today to express my wholehearted support for the Health Security National Security Cess Bill 2025. This bill proposes a cess on the production of pan masala and other notified goods, either based on the machine capacity or manual production. Its purpose is clear: to discourage consumption of harmful products and safeguard public health. Sir, tobacco and related products remain among the leading cause of preventable deaths in India, accounting for an estimated 1.35 million deaths every year. By reducing consumption, this bill is not merely a physical measure, it is a vital public health intervention. The revenue generated will be used for two crucial areas: health security and national security. On national security, under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, India has made remarkable progress from strengthening borders to ensuring citizen safety at home and abroad. Sir, I would like to thank the government for the prompt and compassionate action in ensuring the safe repatriation of fishermen from my constituency, Kakinada, who had inadvertently drifted into Sri Lankan waters. Their safe return along their boats reflects the government's commitment to protecting the dignity and safety of every Indian citizen. Whether through the large-scale defense operations like Operation Sindoor or swift rescue of citizens, the government has consistently demonstrated strategic clarity and effective execution. Sir, India's defense capabilities have grown tremendously over the past decade. Defense expenditure increased from 2.53 lakh in 2013-14 to 6.8 lakh crore in 25-26. Defense production has tripled up from
5 lakh crore in 24-25. Defense exports have now reached 100 countries, including US, France, and Armenia. But, sir, a secure nation is also a healthy nation. India's health sector has undergone unprecedented expansion. Ayushman Bharat PMJY has provided health protection to 55 crore people, enabling treatments worth 1.1 lakh 9 crores. The Ayushman Digital Mission ABDM has linked 55 crore health records to 78 crore ABHAs. Under PM ABHIM, over 28,000 health and wellness centers has been strengthened nationwide. The National Health Mission budget has risen 70%, reaching 37,226 crore in 25-26. Sir, these achievements reflect a decade of visionary and compassionate governance. However, I wish to make a humble submission regarding the cess revenue. Health is a state subject, and the implementation of health initiatives ultimately depends upon states. I therefore urge the government to explore a mechanism to share a portion of cess revenue with the states. This will ensure the national health missions, schemes, and infrastructure reforms are implemented effectively across all regions. Stronger states will make more for stronger India, and sharing revenue will deepen the impact of this progressive bill. In conclusion, sir, the Health Security and National Security Cess Bill 2025 is timely, responsible, and forward-looking. It will reduce consumption of harmful products, safeguard public health, strengthen the national security, and mobilize critical resources for the nation's future. I fully support the bill and urge the government to ensure that its benefit reaches every citizen across the India. Thank you, sir. आनंद बतौरिया। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। कितना अच्छा होता कि सरकार पान मसाला के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक लाती और हम सभी उस पर चर्चा कर रहे होते। सिर्फ राजस्व इकट्ठा करने के लिए लोगों के जीवन से सरकारें कब तक खेलती रहेंगी? आखिर हम कौन सा भारत बनाना चाहते हैं? लगा के चोट मरहम की बात करते हो, जहर देते हो, फिर रहम की बात करते हो। विधेयक देखकर ऐसा लगा मुझको कि आप आपदा में भी अवसर की बात करते हो। आज देश के जितने भी पान मसाला उत्पादक हैं, कभी हो क्या भदौरिया जी, कभी हो क्या? वो अरबपति खरबपति बनते जा रहे हैं और उसे खाने वाला आदमी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होकर समय से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। पान मसाला में कांच पीस करके मिलाया जाता है जो गाल में घाव कर देता है और वो कैंसर बन जाता है। सत्ता पक्ष की तरफ से ओपनिंग बैट्समैन आदरणीय जगदम्बिका पाल जी को सुन रहा था तो बर्बत सच्चाई उनके मुंह से निकल गई। उन्होंने कहा कि ये विधेयक दुनिया की बिगड़ती अर्थव्यवस्था के झटके से निपटने में भारत की मदद करेगा। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सेस लगाकर डॉलर के मुकाबले गिरते हुए रुपए को आप बचाना चाहते हो। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि सेस का कुछ हिस्सा हम राज्यों को स्वास्थ्य जागरूकता के लिए देंगे। अध्यक्ष जी, यह कितना हास्यास्पद है कि पहले बीमार बनाइए फिर जागरूकता फैलाइए। दरअसल ये उपकर सरकार की आर्थिक विफलताओं को आम जन की जीवन की कीमत पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराना है। आप कभी स्वच्छ भारत उपकर, कृषि उपकर, शिक्षा उपकर लगाते हैं, परंतु सीएजी कहता है कि शिक्षा स्वास्थ्य उपकर के लाखों करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किए गए। इसलिए आपका यह कहना कि सेस लगाने से कीमत घटेगी और खरीदार हतोत्साहित होंगे, मैं कतई सहमत नहीं हूं। आप कितनी भी कीमत बढ़ा लीजिए, ये जो पान मसाला की तलब है ना, ये नहीं छूटने वाली। लोग खूब खाएंगे और शान से कहेंगे कि मैं राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खा रहा हूं। इसलिए आपको खूब राजस्व मिलेगा, बनाने वाले और अमीर होंगे, खाने वाले कैंसर से बेचारे मरते रहेंगे। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का मुफ्त इलाज किया जाए। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कीर्ति चिदम्बरम। It's Karthi, sir. Karthi Chidambaram. Yes, thank you, sir. Right. Thank you, sir. Sir, this bill. दोनों बोलते बताते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक करना हमारा काम है। This bill is actually a continuum of yesterday's bill, sir. And you're given adequate time, in fact, very luxurious time for both the bills. This also shows that the government has a very
light legislative agenda. Anyway, thank you for the time, sir. Sir, this bill is called the Health Security National Security Cess Bill, sir. This name confounded me. Because, see, sir, say, if you actually look at it in the English dictionary, it actually denotes the chemical selenium. So I was completely confused why selenium is here in this name of the bill. Then I had to ask some of my colleagues. They told me that say is actually a Hindi word which says that it's from health security to national security. So this government is now levying a cess to strengthen health security and national security. Perhaps they were prompted by the failures in Pahalgam and Chandni Chowk that they think that they need to have more resources to prevent these kind of terrorist strikes. The House has still not been taken into confidence. No accountability has been fixed for those 2 terrorist strikes. I hope during this session we will get some holistic answers from the government on why Pahalgam happened and where the accountability will lie and why the terror strikes in Chandni Chowk happened. Sir, I have some specific objections to the bill. My colleague, Dr. Vishnu Prasad, has very eloquently talked about the anti-federal nature of cess tax. Every time a government raises cess on some pretext, the money is never really spent on the intended purpose. This is not just a critique of this government, sir. Successive governments in India have raised cess and never spent on it. And there are enough reports which say that the money collected as cess, even the education cess, I think one report said that we collected some 4% as education cess, and about 90,000 odd crores has never been deployed. So this, I'm afraid that this fund also will face the same condition, and the money will never be spent for intended purposes. When it comes to intended purposes, the bill doesn't say what the intended purposes are. It basically says health security to national security. It's like motherhood and apple pie. Nobody can object to it. But what are you going to specifically spend it on? That has not been specified at all. How much revenue you will get in this through this cess? That has not also been specified, sir. This is an overarching bill which gives the power to the government to add any other product to it and also to increase the rate without ever coming back to Parliament. So it is actually going to bypass Parliament in the future. It is going to collect money which is not going to go to the states. In those 2 counts, I object to this bill, sir. Third, sir, this bill, the tax, the cess is going to be not on production, but on production capacity. This production capacity is going to open a Pandora's box for the bureaucrats to go and harass these manufacturers. Because one manufacturer will have a certain production capacity, but he will say, my machine is not working. So how do you calculate my production capacity? I have not got my spare parts. Last year there was a flood. Insurance company is not giving me money to repair my production capacity. So this is the most arbitrary way of levying a tax. This is going to create confusion. This is going to create corruption. This is not ease of doing business, sir. This is only helping the bureaucracy, another tool to go and harass. So this bill is anti-federal because it is a cess. This bill is anti-business because it is production-linked. And this bill is anti-health because it doesn't specify what it's going to do for health. This bill is anti-national security because it does not say what is going to do for national security. So I urge this House to reject this bill, sir. Thank you very much. Commission recommendation. Prime Minister Modi's desire was recovery after COVID should be good. So Bengal received 24,000 crores. Kalyani 11 medical colleges have been opened in West Bengal, sponsored by centrally sponsored scheme. That is our scheme. 11 medical colleges. Railways, under the NDA government, West Bengal received a record budgetary allocation of 13,955 crore for railway projects in the year 25-26 alone. Just 1 year. Which is over 3 times the average outlay of 380 crore during 13,000, sir, which is over 3 times the average outlay
of 4,380 crore during 2009-14, sir. I told you, sir, about the number of companies which have left West Bengal. I give you the data, I will authenticate it, I have no problems. From 1st April 2011 to 2025, 30th September, 448 listed companies have left Bengal. 6,447 companies, unlisted companies have left Bengal. Madam, I think we can stick to the Central Excise Amendment Bill alone. This is a data that I'm giving. Honorable Minister, I think you can now stick to the Central Excise Amendment Bill. Please, you address to me and conclude. Other than that, sir, 101 Amrit railway stations, sir. 101 Amrit stations at 3,847 crores are being developed. 1,650 kilometers have been electrified. 98% have been electrified in the entire Bengal. 2,000 kilometers, 2,300 kilometers of national highway constructed in Bengal since 2014. Sir, other than this, Bagdogra Airport development in Siliguri at an estimated cost of 1,409. Honorable Minister, you please reply only regarding the Central Excise Amendment Bill. Please conclude. Any further, sir? Yes, please. So the excise bill will have to be considered by this honest August House and passed. Thank you very much. The question is that the Central Excise Amendment Bill 2025 as passed by the Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up class by class consideration of the bill. Class 2 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Class 2 is adopted. Class 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Class 1, the enacting formula and the title are adopted. Srimati Nirmala Sitharaman ji to move. To move. Sir, I stand to request that the bill be returned, sir. That the bill be returned. Motion moved. The bill is that the bill be returned. The question is that the bill be returned. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is returned. Special mentions, Sri Sanjay Kumar Jha. पति महोदय, मैं प्राचीन नालंदा महाविहार विश्व की प्राचीनतम ज्ञान परंपराओं और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक आदान प्रदान का प्रतीक रहा है। वर्ष 2010 में विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद से भारत सरकार इसे पुनः विश्व स्तरीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु सतत प्रयासरत रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय ने 40 से अधिक देशों के साथ शैक्षणिक व शोध सहयोग स्थापित किया है, जिनमें आसियान, बिम्स्टेक और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के देश शामिल हैं। यह नालंदा की ऐतिहासिक भावना ज्ञान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मित्रता का आधुनिक पुनरुत्थान है। विश्वविद्यालय साउथ एशियन स्टडीज, बुद्धिस्ट स्टडीज, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्टडीज, इंटरनेशनल रिलेशंस और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन जैसे क्षेत्रों में वैश्विक शोध का प्रमुख केंद्र बन रहा है। 2023 में नालंदा के प्राचीन अवशेषों को
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किए जाने से इसके अंतर्राष्ट्रीय John Better ji, please, don't disturb the other members, please, छात्र नामांकित हुए, जिससे यह वास्तविक रूप से बहुराष्ट्रीय परिसर के रूप में उभर रहा है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी और कल्चरल डिप्लोमेसी के अंतर्गत नालंदा विश्वविद्यालय आसियान बिम्स्टेक क्षेत्रों के लिए साझा अकादमिक मंच बनकर भारत की विश्व गुरु की भूमिका को मजबूत कर रहा है। मेरी सरकार से यह मांग है कि इसे वैश्विक रिसर्च हब बनाने हेतु संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अवसंरचना और परिसर के संरक्षण एवं डिजिटल पुनर्रचना को और सशक्त किया जाए। वैश्विक शोध नेटवर्क के साथ संयुक्त अनुसंधान को और बढ़ावा दिया जाए। परिसर के संरक्षण, डिजिटल पुनर्रचना और वैश्विक पर्यटन शिक्षा मॉडल को भी सशक्त किया जाए। नालंदा विश्वविद्यालय का पूर्णोदय केवल बिहार या भारत का गौरव नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व की साझा बौद्धिक विरासत का पुनर्जागरण होगा। बहुत बहुत डॉक्टर संदीप कुमार पाठक। थैंक यू वेरी मच सर। मैं सरकार का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण, चिंताजनक और लंबे समय से उपेक्षित बुनियादी ढांचे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पंजाब के तलवाड़ा शहर और उसके आसपास के गांव जैसे हाजीपुर, गढ़शंकर, मुकेरिया, बहरामपुर और अन्य पिछले 40 सालों से रेल सेवा के वादे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वर्ष 1981 में घोषित इस 84 किलोमीटर लंबे नंगल तलवाड़ा रेल प्रोजेक्ट पर अब तक लगभग 2000 करोड़ से अधिक की राशि खर्च हो चुकी है, लेकिन आज भी स्थानीय लोग अंतिम चरण तलवाड़ा तक रेल पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस देरी का कारण स्थानीय लोगों को न केवल यात्रा में कठिनाई होती है, बल्कि इस क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास भी रुका हुआ है। मेरी सरकार से यह मांग है कि इस पर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। श्रीमती गीता लय चंद्रप्रभा जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद के जिला मुख्यालय सहित प्रमुख कस्बों में सीवरेज सहित अन्य जल निकासी व्यवस्थाओं का अभाव है। जनपद के प्रमुख कस्बे जैसे बिधूना, छलदा, दिव्यापुर, फफूंद आदि में जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्थाएं न होने के कारण जगह जगह जल भराव की स्थिति बन जाती है, जिससे इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जल भराव से उत्पन्न होने वाले मच्छरों एवं अनेकों बीमारियों का सामना करना पड़ता है। बरसात के समय इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के पास निकलने का पर्याप्त रास्ता नहीं होता है। स्कूली बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों को जल भराव की समस्या का सर्वाधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः आपसे निवेदन है कि सरकार द्वारा संचालित अमृत योजना या शहरी क्षेत्र में जल निकासी तथा सीवर से संबंधित किसी अन्य योजना के अंतर्गत औरैया जनपद के प्रमुख नगरीय क्षेत्रों में सीवरेज तथा जल निकासी की सुविधाओं को विकसित करने का कष्ट करें। धन्यवाद। It is now 6 p.m. If the House agrees, we may sit beyond 6 p.m. till the disposal of today's listed business and the special mentions permitted for today. Do I have the leave of the House to extend this sitting beyond 6 p.m.? Yes. Continue. अतः आपके माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा संचालन अमृत योजना या शहर क्षेत्र में जल निकासी तथा सीवर से संबंधित किसी अन्य योजना के अंतर्गत औरैया जनपद के प्रमुख नगरीय क्षेत्रों में सीवरेज तथा अन्य निकासी की सुविधा को विकसित करने का कष्ट करें। धन्यवाद। श्री रामचंद्र जंगरा। एक अति महत्वपूर्ण विषय के ऊपर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आजकल कृषि क्षेत्र में अति घातक कीटनाशक व खरपतवार नाशक केमिकल किसानों द्वारा प्रयोग किए जा रहे हैं, जो कृषि भूमि को अति जहरीला बनाते हुए प्राणी मात्र के लिए विनाशक सिद्ध हो रहे हैं। कुछ केमिकल तो इतने विषैले हैं कि अगर उनके छिड़काव किए हुए या डाले हुए स्थान से 1 सप्ताह तक गलती से कोई घास निकालकर पशुओं को डाल दे तो पशुओं की मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार आजकल किसान मेड़ों या सिंचाई के लिए प्रयोग होने वाली नालियों में उगे घास को किसी कृषि उपकरण से उखाड़ने की बजाय वहां पर उगे घास को समाप्त करने के लिए एक केमिकल का छिड़काव कर देते हैं। यह केमिकल इतना घातक होता है कि जहां छिड़काव होता है
वहाँ जमीन स्पंज की तरह नरम हो जाती है तथा जमीन के नीचे 1.5 फुट की गहराई तक चूहा या सांप वगैरह होता है, वो भी मर जाता है। कुछ दिन पहले एक किसान सुबह सवेरे खरपतवार घास छिड़काव करके चला गया। थोड़ी देर बाद एक चरवाहा वहां अपनी भेड़ें को चराने के लिए आ गया। वहां के घास को खाते ही उसकी 45 भेड़ें मर गई। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उसके साथ उगे अनाज के पौधों में उसका कितना असर जाता होगा। जिस अनाज को पशु इंसान सभी खाते हैं उसमें कितनी विषाक्त और बीमारियां आती होंगी। कृपया सरकार इसकी तरफ ध्यान दे, किसान को प्राकृतिक खेती की तरफ प्रोत्साहित करे। श्री गोल्ला बाबूराव गारू। Before I start the special mention, I want to thank the BJP government and Health Minister Sri Nadda ji for starting an innovative program, Dr. Ambedkar Medical Aid Scheme, to the scheduled castes and scheduled tribes. The government is implementing Dr. Ambedkar Medical Aid Scheme to provide medical treatment to patients suffering from serious health problems relating to kidney, heart, liver, cancer, brain hemorrhage, etc. for SC and STs. It is a very good scheme for the poor SC STs. Under the scheme, 100% of the estimated cost of the treatment is given to the concerned hospital. But there are various limitations, and one of them is family income of SC STs should not exceed 3 lakhs only. Secondly, if one looks the money given for the various surgeries, treatment, it appears to be insufficient. For example, the following amounts are being given: the heart surgery 1.25 lakhs, kidney surgery 3.5 lakhs, cancer 1.75 lakhs, brain surgery 1.5 lakhs, kidney transplant 3.5 lakhs, spinal surgery 1 lakh. The rates for various surgeries are just a fraction of the real cost for important surgeries and treatment. Government is saying that 100% of the estimated cost of the treatment is directly released to the concerned hospital. But the real estimated cost is much more and more. Not only this, income limit fixed for the family is also too low, which is only 3 lakhs per annum for family income. Hence, I request the government of India to revise the family income limit to 10 lakhs and also increase the limit for various treatment surgeries to at least on par with the rates of CGHS. Thank you. श्री शक्ति सिंह गोहिल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं एक अहम मुद्दे को यहाँ उपस्थित कर रहा हूँ। गुजरात के भावनगर जिला के धौला रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे ब्रिज का काम काफी समय से विलंब में पड़ा हुआ है। करोड़ों रुपए खर्च हो गए हैं, थोड़ा सा ही काम बाकी है। यह काम लंबे अरसे से नहीं हो रहा है। कॉन्ट्रैक्टर समय मर्यादा में अगर काम नहीं पूरा करता है तो कॉन्ट्रैक्ट में प्रावधान है, रिस्क एंड कॉस्ट से ये काम पूरा करवाना चाहिए। मेरी सरकार से ये अनुरोध है कि रिस्क एंड कॉस्ट पे भी जरूर पड़े काम करके इस ब्रिज का काम तुरंत पूरा करना चाहिए। सरकार ब्रिज का काम पूर्ण होने की वजह से ट्रैफिक जो वहां पे अभी जो प्रॉब्लम्स हो रहा है सर, 2 रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करना पड़ता है और लंबी लंबी कतारें वहां लग जाती है और पूरा ट्रैफिक इससे प्रभावित होता है। अतः आपके जरिए मेरा पूरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार तुरंत ही धौला ओवरब्रिज का जो काम थोड़ा बाकी है उनको पूरा करे। धन्यवाद सभापति महोदय। श्री संजय सिंह जी। डॉक्टर संगीता बलवंत जी। माननीय सभापति महोदय जी, आपके सभापति बनने के बाद प्रथम बार मुझे बोलने का अवसर मिला है, इसलिए आपके अभिनंदन के साथ मैं आपको बधाई देती हूं। माननीय महोदय, सदन के माध्यम से मैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे गंभीर बीमारी की तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं। यह बीमारी मांसपेशियों से संबंधित बीमारी है, जिसमें जो बच्चे या वयस्क इस बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, उनकी मांसपेशियां कमजोर होने से वह धीरे धीरे पूर्णतः दिव्यांग हो जाते हैं। इस बीमारी के इलाज का खर्च बहुत ज्यादा होने के कारण अधिकांश मरीज
अपने इलाज का खर्च वहन नहीं कर पाते हैं। इलाज के अभाव में वह पूर्णतः दिव्यांग हो जाते हैं और शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो जाती है। माननीय सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से मैं मांग करती हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के मुहिम को पूर्ण करने हेतु संपूर्ण भारतवर्ष में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित बच्चों एवं वयस्कों के समुचित इलाज हेतु न्यूनतम दर पर दवाओं का प्रबंध किया जाए। साथ ही मरीजों के जीवन यापन में सुधार हेतु विशेष सुविधाएं प्रदान की जाए, जिससे इस गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों एवं उनके परिवार वालों को मदद मिल सके। धन्यवाद। श्री मदान राठौर जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अत्यंत गंभीर और चिंताजनक सामाजिक समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, और वह है बच्चों और युवाओं में बढ़ती आक्रामक प्रवृत्ति और हिंसात्मक व्यवहार। आज के समय में विद्यालय जैसे सुरक्षित माने जाने वाले स्थानों में भी छात्र एक दूसरे पर चाकू से हमला कर रहे हैं। मारपीट की घटनाएं आम होती जा रही है और यह प्रवृत्ति केवल महानगरों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों तक फैल चुकी है। हाल ही में एक स्कूल में एक छात्र द्वारा अपने सहपाठी पर चाकू से हमला करने की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। देश भर में ऐसे कई उदाहरण सामने आ रहे हैं। गाजियाबाद में एक छात्र ने परीक्षा में कम अंक आने पर स्कूल में तोड़फोड़ कर दी, और मुंबई में एक 15 वर्षीय छात्र ने गेम न खेलने देने पर अपने पिता पर हाथ तक उठा दिया। इस समस्या के पीछे कई कारण है। परिवार में संस्कारों की कमी, सामाजिक और डिजिटल मीडिया से आने वाली हिंसात्मक सामग्री, नैतिक शिक्षा का अभाव, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति उपेक्षा, माता पिता के बच्चों से संवादहीनता, यह महज एक सामाजिक चिंता ही नहीं बल्कि आने वाले भविष्य के लिए गंभीर चेतावनी है। यदि हम आज नैतिक शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और परिवार की भूमिका को लेकर सजग नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ी एक संवेदनहीन समाज की ओर बढ़ती जाएगी। अतः मेरी आपसे विनम्र अपील है कि विद्यालयों में नैतिक शिक्षा और जीवन मूल्यों को पुनः अनिवार्य किया जाए। शिक्षकों और अभिभावकों के लिए संवेदनशीलता कार्यशालाएं आयोजित किए जाए। छात्रों के लिए मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई जाए। सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग कंटेंट्स पर निगरानी और मार्गदर्शन सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद। श्रीमती माया नारोलिया। नहीं। श्री I.S. इनबदुरई। डॉक्टर मेहता विश्राम कुलकर्णी जी। Thank you, Honorable Chairman, sir. My subject is circulation of AI-generated and morphed obscene content of Hindu gods and goddesses on social media and the urgent need for a Hindu faith protection law. Honorable Chairman, sir, I wish to draw the attention of this august House to a deeply disturbing and sensitive issue. In recent months, social media platforms and several internet sites have witnessed a surge of AI-generated, morphed, and deepfake nude and obscene images and videos of Hindu gods and goddesses. Reports indicate that a large number of Hindu deities are being deliberately and systematically targeted by certain miscreants with malicious intent, clearly aimed at hurting religious sentiments, provoking communal tension, and destabilizing social harmony across the country. Sir, the misuse of artificial intelligence, deepfake tools, and sophisticated image manipulation technologies have opened a dangerous new front in cybercrime. Religious icons and sacred imagery are being distorted and circulated with impunity, revealing not only the inadequacy of current legal frameworks, but also the urgent need for stronger accountability mechanism for digital platforms. The scale, coordination, and intent behind these activities show a planned attempt to malign Hindu faith and
undermine cultural unity. In this context, I urge the government to take the following steps. Launch immediate, strict, exemplary action against those creating or circulating such offensive content. Mandate social media companies to deploy proactive AI-based detection, swift takedown systems, and stricter verification protocols for sensitive content. Formulate a strong and comprehensive Hindu faith protection law or anti-blasphemy law with stringent provisions against AI-enabled religious defamation. Establish a special cyber task force dedicated to religious discretion cases. Protecting our faith, cultural dignity, and social harmony is our collective constitutional responsibility. I request urgent intervention from the government. Thank you, sir. Shriman Muhammad Nadimul Haqji. Thank you, sir. So my subject is need to boost manufacturing sector amid global uncertainty. The economic growth of the country continues to be adversely affected by the stagnant manufacturing sector. In India, the manufacturing sector contributes to just 17% of the GDP. Even if you look at the decadal figure, the contribution of the manufacturing sector to the overall gross value added has been around 17 to 18% for the last 10 years. We have not achieved the scale necessary to drive employment, exports, or technological upgradation, which would integrate the Indian industries into the global manufacturing network. If we look at the global picture, India has only 3.3% share in global manufacturing output, which is disproportionately low for the world's fifth largest economy. One major reason is that India is still not integrated well into the global value chains, GVCs, while GVCs make up about 2/3 of all world trade. The current global context necessitates such participation. The US-China strategic rivalry, new tariff and non-tariff barriers, and recurring disruptions in key shipping corridors such as the Red Sea have increased uncertainty in cross-border supply chains. Further, in the year 24-25, merchandise trade deficit increased by 17% to US $282.8 billion from last year. This raises concern about the increasing import dependence of the country. Without reducing logistics and input costs and building domestic capacity in high import sectors, India's manufacturing sector remains exposed to external shocks and cost volatility. I urge the government to look into it. Thank you, sir. Shriman Ramji Lal Sumanji. Srimati Rekha Sharma ji. Thank you, Chairman, sir. Sir, I rise to draw the attention of the government to a pressing challenge. As India positions itself as a global leader in science, technology, and innovation, as the persistent underrepresentation of women in science, technology, engineering, and mathematics field, particularly in the frontier areas such as artificial intelligence, technologies, and advanced engineering, while our nation has made significant stride in expanding access to education, the transition from STEM classroom to career in high-tech sectors remain uneven for women. Although women constitute 43% of STEM graduates, only around 14% of researchers are women. This stark decline highlights the social constraints, institutional issues, and structural barriers that young women encounter. Many face limited mentorship, fewer opportunities for professional growth, and subtle hiring prejudices that hinder the participation in cutting-edge research, innovation, and high-value technologies roles. To address this gap,
I urge the government to expand scholarship schemes for women pursuing advanced research degrees, particularly PhDs and postgraduate programs. Partnership with industry should foster women-focused fellowship in AI, semiconductor design, cybersecurity, and deep tech R&D. Educational institutes should be mandated to publish annual reports on gender inclusivity, mentorship programs, and placement outcomes in STEM, promoting transparency and accountability. India's technological future can't be built on half its talent. It is our collective responsibility to ensure that girls and women from every region, background, and income group have equitable access to opportunities in STEM. Empowering women in science and technology is not merely a question of fairness. It is essential for the nation's innovation and growth. Thank you, sir. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Friday, the 5th December 2025.